Swayam Prabha. Digital India. Educated India. It is my pleasure to introduce today the exceptional team that has emerged victorious in the Smart India Hackathon, showcasing unparalleled innovation in the realm of renewable and sustainable energy. Their triumph not only highlights their technical prowess, but also underscores their commitment to steering our collective future towards greener, more sustainable pastures. Without wasting any more time, let me introduce Atul Saini and his team. Hello sir, my name is Dronacharya Yadav and I have done research work in this project. Okay. Hello sir, my name is Aditya Gautam and I did the hardware integration part of this project. Hello sir, my name is Dronacharya and I designed this part. Hello sir, my name is Dulsani. I am the team leader of this project and I have done 3D modeling in this project. Hello sir, myself Ben Varnika and I am doing the presentation in this project. Well, it's my pleasure to meet all of you today here. So let us start by discussing the problem that you were, dealing with. What exactly was the issue? What exactly was the problem that you were supposed to handle and, come up with a solution for it? So sir, as you know, the world is facing a plastic crisis. Over 1.3 million tons of waste plastic water bottles are generated in India, by which only 30% of them is being recycled. Simultaneously, the field of 3D printing filament is growing rapidly, which demand a versatile and affordable supply of its raw materials. So yeah, certainly the plastic waste is definitely a huge problem. Yes, sir. All the world is suffering from that menace, Yes, sir. and I guess a lot of work is also happening in that direction. So it'll be interesting to know what you guys have done, what you guys have come up with as a solution. So what is the solution that you've come up with? So sir, we are converting waste plastic water bottles into a 3D printing filament that will be provided at cheaper rates according to its compatible material and with a better quality. So Aditya will explain the method how we are converting these. Yeah, surely we'll look forward to the way you are doing this, way you're approaching this particular thing. Aditya? Okay. So first of all, I would like to introduce about the 3D printing. What's a 3D printing market and all? So 3D printing is a additive manufacturing technique by which we can make prototypes very rapidly as compared to other modeling techniques like claying and all. And also the market of the 3D printing is rapid increasing. If we see the global market of the 3D printing, it's around $93 billion, and it's projected in 2030 around to $90 billion. And also in India, it's a it's a good market. Currently, it's around $80 million, but it will rise very rapidly in the future. So as we are seeing the future, so we are we came up with the idea. So why not we just convert a waste plastic bottle into something useful? So for that we are making the 3D printing filament. So what's a filament? So basically for the 3D printing we need something raw material. So the raw material is the filament. Like there are many different types of 3D printing like SLA, FDM and all. So we are mainly focusing on FDM, that is fused deposition modeling. So for that we are converting plastic bottles into the raw materials. So for converting the plastic bottle into the material for the 3D printing, we have come with this idea. This is a machine. Okay. So basically how this is work. So basically first we took a bottle like a Bisleri bottle and all, and then we cut that bottle into the strip. Like this is the Bisleri bottle. We cut into the strip with the use of this part. After cutting the strip, we have to convert this rectangular sheet into a cylindrical, because a filament is in a cylindrical cross section area. For converting that, we use the extrusion process. For the extrusion, we use the heating process. For the heating, there is the heater here. So when we pass the strip through the heater, it will melt the strip and it will convert into the cylindrical form, as the nozzle of the heater is in the cylindrical form.
So after the filament is the strip is converted into the cylindrical cross section area. After that, we have to look one thing very carefully: the diameter of the filament. So it should be around 1.6 to 1.75 mm, because below that the cross section area, it won't work. So measuring the diameter of the filament, we use the measuring machine here. So it's a measuring caliper. By this we can measure, see what's the current diameter of the filament. So I just want to understand here, if the diameter is not to that measure that you're saying, what happens then if it is lesser or greater than that? Okay. So in the FDM 3D printer, there's a extruder that grips the filament and it pushes into the heater material. If the filament diameter is less than the requirement, then it won't grip the filament cave accordingly. And if the diameter is too big than the 1.75, then it won't travel through the printer heater and all. Okay. So now you can carry on. Okay, so after taking the measurement, if the measurement is good, we will just simply wind the outcoming the filament on this spool, and there's a automated spool, and it will automatically wound the filament around this spool. Okay. So after that, we will get our filament. This is the filament that can be directly used in the 3D printers. So this is your final product. Yes. Which actually traveled from a waste plastic bottle, turned into a particular kind of raw material for you. Yeah. And that raw material gets turned into this particular Filament. Yes. which is your product. Yes, right? sir. Wonderful. So the process seems pretty effective and neat. So I can see you brought a prototype here. So can we actually have a look at how it's working exactly, the practical part of the solution? सो अभी जैसे हमने अभी बात किया था कि हम 3D प्रिंटिंग होता क्या है, 3D प्रिंटिंग में हम क्या कर रहे हैं. सो ये हमारा मशीन है, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ इसमें कैसे कैसे क्या क्या पार्ट्स है. सो फर्स्टली हमारा ये है कटिंग स्टेशन. यहाँ से हम बोतल को हम स्ट्रिप में कन्वर्ट करते हैं. देन हमारा स्ट्रिपिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमारा है हीटिंग स्टेशन. यहाँ पे ये हमारा हीटर है जिसके थ्रू हम हमारा जो स्ट्रिप है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फिलामेंट में. देन उसके बाद हमारा कूलिंग स्टेशन है. यहाँ पे हमारा कूलिंग फैन है जिससे कि हम उस शेप को हम रिटेन कर सकें. देन आफ्टर दैट हमारा है कैलिपर स्टेशन. यहाँ पे हम मेजर करते हैं कि हमारा जो डायमीटर है फिलामेंट का वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है. देन उसके बाद हमारा दिस इज द गाइडिंग पुली. देन उसके बाद हमारा है वाइंडिंग स्टेशन. यहाँ पे हमारा इस पुल पे हम वाइंड करेंगे हमारा फाइनल प्रोडक्ट. एंड यहाँ पे हमारा है कंट्रोल यूनिट. सो यहाँ पे आप दो डिस्प्ले दे सकते हैं. टॉप डिस्प्ले पे हमारा वाइंडिंग जो हमारा मोटर है इसका हमें स्पीड दिखता है. एंड ऑन द लोअर डिस्प्ले हम देख सकते हैं कि हमारा जो हीटर है इसका करंट टेम्परेचर क्या है और हमारा डायमीटर कितना है. ओके ग्रेट. तो कुछ हम चला के देखें. ओके. सो अभी आप जैसे डिस्प्ले से देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेम्परेचर अभी हमारा हीटर अभी हीट हो रहा है. लाइक हमारा जो फिक्स्ड टेम्परेचर अराउंड 240 डिग्री सेल्सियस है. देन अभी ये इंक्रीज कर रहा है अपना टेम्परेचर. देन आफ्टर जब हमारा ये टेम्परेचर 240 के अराउंड जब स्टेबल हो जाएगा देन हम इसमें अपना स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस. सो जैसे कि हमने हमारी बोतल को हमें स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लिया है. ये हमारी स्ट्रिप है. हम इस स्ट्रिप को हम डायरेक्टली हम अपने हीटर से पास करेंगे. सो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर 240 के अराउंड आ चुका है. ओके. सो आफ्टर दैट हम हमें एक बार स्टार्टिंग में मैनुअली इसको हमें पुल करना पड़ता है. देन उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप हमारा फिलामेंट रेडी होगा. मैनेजिंग. ओके. सो लाइक हमारा वाइंडिंग मशीन हमारा काम कर रहा है. देन ऑटोमेटिकली अपने आप एक्सट्रूड पुल करेगा. देन हमारा
फिलामेंट जो हमारा इसमें वाइंड हो जाएगा। आई मीन थोड़ा स्लो चलता है मोटर ताकि हमारा जो जितना हमें फोर्स चाहिए उतना इसको फोर्स अप्रोप्रिएट फोर्स में मिलता रहे, ताकि हमारा जो डायमीटर है वो हमारा एग्जैक्ट उसके आसपास हमें मिल जाए। सो ग्रेट। सो आई कैन सी कि काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी आपने इसमें मेहनत की है इसको बनाने के लिए। अब थोड़ा सा जो मैं समझना चाहूँगा आपसे कि ये किस तरह से डिफरेंट होगा किसी भी और फिलामेंट से जो फिलामेंट आप ये बनाने वाले हैं। So is it going to be better in terms of quality, or is it going to be cheaper than the other ones? How will it be different? Okay. Okay. Yeah. One difference I understand and I appreciate is कि आप recycled material use कर रहे हैं. So that is there. So apart from that. ओके, सो सिंपली पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि फिलामेंट जो मटेरियल जो 3D प्रिंटिंग में यूज होता है डिफरेंट होते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। लाइक देयर आर PLA, नायलॉन, ABS, PETG एंड TPU. All of them have their own purposes. So on while we are focusing on the PETG, that is polyethylene terephthalate. When we compare both of them, like the market ready PETG and the PET that we are producing, both have the same property. And if we talking about the price of our filament will be half of the market, the other commercial that we can get from the market filament. Great. So basically आप waste material को recycle कर रहे हैं, उसके यूज से आप एक tangible product produce कर रहे हैं और half the price पे produce कर रहे हैं. So this is I think wonderful. We couldn't have asked for anything more. So now what is next? Like इसको आप कमर्शियली आगे लेके जाना चाहते हैं, एक बिजनेस में क्रिएट करना चाहते हैं, कि आपका अगला कदम क्या है, या इसी में फिलहाल आप थोड़ा बहुत और R&D करके इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं? सर नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स हैं हमारे, हम फिलामेंट भी बेचेंगे और एक किट भी। लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताएंगे 3D प्रिंटर होता क्या है, आप अगर यूज़ करना सीख गए तो उससे और क्या क्या कर सकते हो। तो बेसिक जो हमारा बिजनेस मॉडल उसमें तैयार किया वो किट के लिए तैयार किया है। ये बेसिक किट हमारी एक्सक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस तैयार होती है 8,995 रुपये में। इसकी पूरी कैलकुलेशन हमारे पास है कि अगर हम एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं कल को, उसमें एम्प्लॉयज़ का कितना खर्चा होगा, क्या होगा, और टैक्सेस इंक्लूड करके हमें से 13,800 कुछ रुपये में सेल आउट कर सकते हैं। उसमें अगर कोई हमें डिलीवरी चार्जेस है वो भी इंक्लूडेड है, हमारी फैक्ट्री सेटअप है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सारा कैलकुलेट करके। और अदरवाइज हमसे कोई फिलामेंट लेना चाहे तो हम एक साइट बना के उसमें 2 सिस्टम रखेंगे। एक तो आपके इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करेंगे, जो आप ड्रिंक्स पीते हैं आपकी कैंटीन में जो होती है उसे हम कलेक्ट कर लेंगे, उससे फिलामेंट बना के आपको कम प्राइजेस पे फिलामेंट भी देंगे। और अगर कोई हमसे किट खरीदना चाहता है तो 13,000 रुपये में हमसे किट लेके जाओ, आप खुद फिलामेंट बनाओ और अपने स्मॉल बिजनेस से लगा सकते हो आप। So your mind is already on the a business plan. So already आपके दिमाग में है कि आपने इसको कमर्शलाइज करना है और एक स्टार्टअप आपने क्रिएट करना है। वंडरफुल। एंड हमारी आपको शुभकामनाएं कि आपका ये स्टार्टअप जल्दी शुरू हो और कामयाब भी हो। सो कोई आपके पास डेडलाइन या कोई आपके पास इस तरह का टाइम फ्रेम है जो आपने सोचा हो कि बाय दिस टाइम वील अचीव दिस मच और वील रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? सर राइट नाउ वी आर इन द प्रोटोटाइप प्रोसेस। अभी हम और इंस्टीट्यूट और हैकाथॉन्स में जाना चाहते हैं, लोगों को इसके बारे में बताना चाहते हैं, फीडबैक कलेक्ट करना चाहते हैं कि हमें से थोड़ा और सुधार पाएँ, थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएँ। उसके बाद सर विद इन 6 मंथ और R&D करके हम इसे और अच्छा बना के मार्केट में लॉन्च करना चाहेंगे। उसके बाद भी हम 3 महीने लेंगे इसका फीडबैक लेने के लिए कि पहले हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है कि अगर हम 7 यूनिट महीने की बेच देते हैं, जो 13,000 रुपये की एक यूनिट है, 7 बेच देते हैं तो हमारी सारी कॉस्टिंग आ जाएगी, ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लेंगे। 84 यूनिट अगर हम 1 साल में बेच देते हैं तो हमारा कोई नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा। उस प्रोसेस के ड्यूरिंग हम और फीडबैक लेंगे, मार्केट को और एनालाइज करेंगे कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं और फिर आगे की योजना बनाएंगे उसके साथ। सो ग्रेट। सो दीज आर आई थिंक सम वेरी बेसिक नंबर्स। आई एम श्योर एंड आई होप दैट द नंबर्स विल बी इन द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट शेयर्ड। सो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। वी विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर जर्नी and once again congratulations on winning this and producing this wonderful machine to recycle waste and turn that into something which is pretty useful. Good to have you here guys, and I hope you will keep shining like this and provide more solutions to the issues of for the country. Thank you for coming here today. Thank you, sir. As we celebrate their triumph today, let us recognize that their success is not just a victory for innovation but a catalyst for positive change. May their project serve as a cornerstone of a more sustainable, ecologically responsible world for generations to come. Goodbye.